TPR. Hi everyone, welcome to another episode of the TPR Pod. Today's episode is with the electronic house music duo called the Fake Shamans. The boys are on the show talking about their career, their how they got together, their struggles in coming up over their around 10-year plus career. The music scene in Pakistan has been doing very well in the past 2-3 years, and especially with Coke Studios release, everyone's really buzzing, everyone's really happy and about positive about the experiences. We spoke to the Fake Shamans, whose music genres are perhaps a bit more niche versus what is very popular in Pakistan, the hip hop and electronic flavors that are very popular currently. I asked them how their experience has been in the light of this recent boom and popularity, and they talk about their struggles in getting their more niche sort of flavor of electronic music, getting that acceptance in the scene, finding places to perform, etc., especially compared to much greater success that they've been seeing abroad, and they've had many performances on medium to large scale events and festivals in many places in Southeast Asia. So we talk a lot about those things, about the perception of art and culture in Pakistan and of people trying to do something different, and how international validation leads to local acceptance as well, even though it should perhaps be the other way around. So yeah, great chat. Thanks very much to the boys again for coming on. Do note, this week they're releasing a brand new single on their own record label with their music video as well. So check out their music, and on the 10th of the month is when the song's coming out. But without further ado, let's jump straight into the episode. This is pod 153 with the Fake Shamans. Yeah, but I think we're pretty clear on that. Okay, but like, I don't know your names. Like, whose name is what? So my name is Umair, and Yeah. he's Muhammad. Okay, nice to meet you guys, boys. Thanks very much for coming on the show. I'm very glad that you guys reached out to me a while ago. I'm sorry it took me so long to get back to you. But yeah, I've been listening to your music since before we spoke, and अच्छा scene है. I always enjoy talking to people from the music scene. So how are things? How are you guys doing? Where are you? Right now we're in Lahore. Okay. We're doing all right. Okay. Yeah, Yeah. and I think he's moving to Canada now. Yeah, next week. So Yeah. Oh, so- moving. yeah, for a good amount of time. Let's Oh see. shit. I think Okay. yeah, perhaps the right time and the weather for that. So I have a friend from Canada who's over ittifaqan abhi. But yeah, I mean, Canada, my biggest issue is the weather. That's what everybody talks about all the time. Winter is बहुत harsh है वहाँ. Kya scene hai? Why are you going to Canada? So I was planning to go there for like 2 saal pehle, but COVID and whole pandemic thing took a really long time. But yeah, I think everything pans out for a reason. So I guess recently I just got my application approved. So yeah, I think I'm gonna make that move Oh, for very now. Yeah. good. But Okay. again, वैसे भी हम productions वगैरह जो हैं वो since COVID हम वैसे भी online ही आपस में एक दूसरे के साथ sync करके कर रहे होते हैं. So I think that the first question is like, what's gonna happen with Fake Shamans? So I think we'll keep that on. Yeah. Okay, We'll keep okay. that on. Okay. Because काफी अरसे से we're not playing in Lahore वैसे भी. Okay. Because we've been like focusing on productions completely, being really exclusive in whatever we select in terms of gigs. So I don't think it's gonna hurt us a lot, because हम लोगों ने जब eventually we came up with Fake Shamans, like was never really targeting local market. हम लोगों का शुरू से यही target था that we're gonna play outside Pakistan. We're going to release our music वहाँ से, because market पाकिस्तान में तब इतनी established थी नहीं for our kind of music, because हम एक just electronic music के अंदर भी हम काफी niche का हमारा music. It's not like typical electronic music which you guys are listening to now. Yeah. Everywhere.
That's more like hip hop and commercial वाली side का. और हमारा जरा एक step जरा deeper है जिसकी बहुत कम listeners or understanding है. But you know, if you move across the globe, the market is pretty massive for us over there, and that's always have been our target. Right. So yeah, that's the plan कि हमने productions release करनी है अगले पूरे साल 1-2 साल. अच्छा, I'm glad we're not starting with the story के हाँ जी हम आ गए podcast पे और अब हम खत्म हो रहे हैं. Like this is the last time. That would have been, I mean, I'm sure it would have been great content, but थोड़ा sad scene हो जाता. अच्छा, लेकिन you mentioned कि you guys are in Lahore and you know you started with some. What's the backstory? Like, how do you guys meet? How do you get together? Are you from Lahore? How do you get into music? Story, puri story chahiye. Sure, you can start. I'll jump in. Basically, puri story ye thi ke we're both actually from Lahore, but we were not here before. Ye bhi Canada mein tha, main bhi England mein tha. Okay. And then we both were in Lahore at that time jab humne basically hamari dosti वगैरह हुई. We were a small group. We used to like hang out together और काफी musically कह लें कि like-minded लोग थे सारे musically. तो उन्हीं के साथ ही हम ज़्यादा hang out वगैरह करते थे और वहीं से हमारा relationship as friends start हुआ. Then he wanted to start DJing and he wanted to learn about it. Yeah. I was like DJing before and then producing before as well. तो फिर इसको मैंने थोड़ा बहुत train वगैरह किया and then we started like you know actually हम जेल भी अच्छा हो गए थे as persons, personalities and musically as well. तो वो अच्छा एक mix हो गया हुआ था. What हमने कहा कि why period don't we like create something out of it. This is probably, I don't know, 10 years ago. 10 Oh, more shit. than 10 years Okay. ago. Yeah. So he moved back from London, or like I've lived in London too. So हम दोनों के जो influence थे, we both were like huge Fabric boys और हमें काफी UK की vibe काफी अच्छी match होती थी. So I came back to Pakistan और हम एक gig पे मिले थे. He was playing over there and he was producing काफी साल पहले से. So I kind of knew about him. But इसकी काफी house में काफी minimal vibe थी जो बहुत कम लोग सुनते थे उस वक्त. So, you know, I was into house music as well. And I thought, you know, maybe we can upscale it a little bit. Let's, you know, perhaps record a couple of sets together and see how it pans out. Because उस time Lahore में gigs और कुछ platforms locally, legally तो थे नहीं. बहुत कम लोगों को पता भी था कि house music, electronic music है. कि I'm talking about like 10 years ago. Of course, like there was a huge market in Karachi. Before us, like Faisal and all these guys were doing in, you know, their scene. But you know, कराची में जरा था ज़्यादा, but लाहौर में कितना नहीं था, बहुत कम एक दो लोग ही थे जो कर रहे थे. So you know, luckily we all came together and we kind of created our own scene. We started playing for friends, small circle, and we loved it. Like it turned out, you know, whatever we brought on the table was something new. And we kind of always had few standards for ourselves कि यार हमने gigs के लिए नहीं जाना, because जो भी gigs मांग रहा होता है ना उसको कोई gigs देता नहीं है. वो यूजुअली डीजेइंग के लिए यहाँ पे यही क्राइटेरिया कि आपकी क्राउड पुल कितनी है, आपकी गेस्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, आपके कनेक्शंस कितने हैं. सो वी लाइक, यू नो, वी गोइंग टू मेक आवर म्यूजिक टू द लेवल जहाँ पे लोग हमारे पास आए, rather than we going to them. So I think we did pretty well in terms of basics. और हमने शुरू से ही अपने आप को अंडरसेल नहीं किया, even though when we were not even, you know, a little bit of popular in Lahore, we were still charging for minimal amount of fees. के तब तो ये standards नहीं थे कि DJs ने बस आके free में बजाने. They're doing you a favor, right? But we always, you know, we learned to say no initially. So that kind of created our own niche as well. There were people who were coming to listen to us. So yeah, वहाँ से शुरू हुआ सीन. You mentioned that you were turning down gigs, and 10 years ago, you know, you started playing. Where were you playing? Ek to, what sort of venues, locations, and if you're turning down gigs, that means you're turning down money. Were you guys like pursuing day jobs? Yeah, kya hisab tha? Yeah, that's a great question. So initially we started off with small circle. हम लोगों के कुछ दोस्त थे who, you know, had their own places like farmhouse and all, और like अच्छे घरों में अच्छी vibes, rooftops. Yeah, I think it was the first time हम एक स्कूल के कुछ बच्चों ने rooftop gig बनाई थी, और like he was playing there and I just, you know, that was the first time perhaps me on the decks. Yeah, we mixed together. Yeah, so I think that's where we realized कि यार थोड़ा सा scene हो सकता है अच्छा. But again,
coming back to the second part, what was the second part? Sorry, I forgot. Like, about what were that. you doing if you're not making a lot of money? What's Yeah. the Yeah, so we both had like day jobs शुरू से ही वो होता है ना, आप जरा बाहर से डिग्रियां करके आए हो तो घर वाले माफी तो नहीं देते आपको। हाँ वो एक डिलीवर करने का सोशल प्रेशर होता है कि 10 लाख ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ yeah ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ exactly ਕੀ ਹੋ ਮਰਾਸੀ हाँ बनना ਤੁਸੀਂ। तो ये सिचुएशन थी, तो हमने थोड़ा सा डे जॉब्स को रखा, बट लाइक वी वर रियली पैशनेट अबाउट दिस, लाइक वी डिडंट रियली केयर कि हमने रात सारी गिग करके सुबह काम पे जाना है। वी वुड शो अप, लाइक इसका सैटरडे को काम होता था, आई रिमेंबर, और हम फ्राइडे की ये गिग्स करके सैटरडे पे सुबह ऑफिस जाता था without sleep, Right. without without anything. sleep and Right. everything। सुबह उठ के दोबारा आप काम पे Yeah, लगे। and that's how crazy, we still are, maybe, Yeah. it depends, but just that, now we have matured a lot, वो एक एज का एक्सपैन गुजर जाता है काफी कि आपने हाँ, वो एनर्जी नहीं वो रहती, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। पैशन नहीं रहता probably। yeah Just I as mean या आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती है। or also Most times. maybe it gets to that sort of thing where shuru mein to even if you're trying to pick and choose your gigs, कुछ अरसे के बाद you're like नहीं bro मुझे पता है मेरी value क्या है and I will play according to my thing because I don't want to just run after opportunities. तो लेकिन you guys said कि there was like a shift in the vibe पाकिस्तान में कि पहले gigs नहीं थे इस तरह के, पहले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं था, हाउस म्यूजिक और कम था. Did that shift in this 10-year journey? क्या has it shifted या 2 साल Yeah, I पहले की think- बात है? I think it's totally changed now because now people are more मतलब वो सुन सकते हैं अब आराम से। पहले इनको ये मसला था कि they just didn't understand it totally. Now I think Right. people do understand it, Right. और people also listen to other musicians as well। मतलब पहले इतने ज्यादा musicians भी नहीं आप सुनते थे, ये Tiesto, Armin van Buuren और ये सारे Yeah, होते थे। yeah, अब I was gonna say. people want to discover new music, अब boiler room, circle, इन सबको वो follow करते हैं। तो I think maturity तो आई है I definitely। think there's somewhat more acceptance of house music now, especially with like Gen Z and millennials के that's the kind of sound they hook up to. But now thing is कि electronic के अंदर भी बहुत सारे sub genres हैं, right? Like we started off listening from trance or commercial and everything, right? And then we started discovering within the genre, and we found out that this is probably my cup of tea now. Right. Like I cannot listen to what I was listening to 10 years ago. I can't even imagine that, right? Perhaps even 3 or 4 years ago, Yeah. right? But I mean, I know when I'm on stage or booth, like that's a totally different vibe. I mean, I can play or mix and match with almost everything because I've been listening to a lot of music for a really long time. So I have stuff in my arsenal to deliver. Right? Yeah. So you keep building your your own playlist and your own vibe, I guess. Vibe basically होती है, then it develops with you and you just keep building on that actually. This does come through with some of your tracks that I've heard. I think Jogi would be like the biggest one, where you guys are fully pulling in like classical music with your own, style, and usko matlab you're chopping it up and doing everything. एक तो how does that come about? How does that, like, why do you, क्योंकि एक ज़माने में ना like the 2000s वाला ज़माना, when music channels started coming out, fusion की बड़ी मौत थी सबको, like हर किसी को the formula was कि आपका एक rock band होगा और singer होगा कोई classical, और बस वो यहाँ solos होंगे, वहाँ वो अलाप होंगे, and this is Pakistani music legally forever and always. और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का लिटरली वही ट्रांस सीन था, टीएस्टो और एवीबी और ये, एटलीस्ट इन कराची where I grew up. तो then it went away, like fusion for a long while. कोक स्टूडियो के अलावा वैसे म्यूजिक सीन भी डेड हो गया जब हालात ख़राब हुए, channels started going down. अभी recently that music has started coming back. It's वही hip hop वगैरह has come back in a much bigger way than it ever was before. But you guys are doing this classical house cross-pollination combination situation. What I was wondering, like the songs are great. लोग सुनते हैं, like do people understand? क्योंकि पाकिस्तान में it's not just कि नई चीज़ है पुरानी चीज़ है. It's like bro, how dare you, मतलब
ये तुमने why did you mix this up, और तुमने नुसरत के vocals डाल दिए इसमें, ये तो मतलब हमारा कल्चर भी फौरन खतरे में आ जाता है. तो speak on that, like Yeah. what's your experience been about that? Sure. So that's a great question again. So कुछ साल पहले की हम बात करें, हमारी जो प्रोडक्शंस हैं वो बहुत डिफरेंट थी. Like we would produce for tech house, same Yeah. Berlin vibe, because that was our eventual goal that हमने ये sound रख लिया. In that process, electronic music के सब genres बहुत change हुए. We came across few labels जहाँ पे लोगों ने ये attempts की थी. Right. Mostly जिस तरह eastern elements लोगों ने बहुत house के अंदर लेकर आए थे, ये Yeah. Iranian DJs और ये सब. Yeah, अच्छा. there was a lot of whole Persian move, a lot of Iranian DJs who were bringing in this sound, right? Right. So we thought, why not, like, this Pakistani music and Eastern culture is so diverse musically. Like हम अगर खोलना शुरू करें तो मतलब नाहीद अख्तर के जमाने से और पैंथर्स के जमाने से there's just so much music that hasn't been even discovered now. Yeah. मतलब जो एक जनरेशन गैप है, उन्होंने शायद वो म्यूजिक सुना भी नहीं. हम अब आके वो म्यूजिक सुनते हैं. And we shot के like एक Pakistani music producer है Ashraf. He used to produce for Pakistani movies back in 1970s. And when I listen to his productions, like the congos and the arrangements he has used, it's way ahead of its time, right? Right. But how do we implement that? And the beauty of electronic music is that it gels in with almost every genre really easily. So you just need to experiment. Right. There's a very high possibility that it will not sound great to everybody. Sure. Right? But the question is कि क्या आप सुनाना चाहते हैं या आप कुछ लोगों को सुनाना चाहते हैं? So it's not for everyone actually. We know, like, our music is not for everybody. We know that. Right. And that's how we want it to be. Did you see a So that's the difference in reaction though, like compared to your more fully Western, for example, perhaps instrumental tracks वगैरह जो कि लोग कहते हैं कि अच्छा जी house music हाँ जी हमें समझ आ रहा है, we're into it. Was there a difference in the Pakistani awam when they heard Pakistani classical meshed in with this? Like, did they like it more, less, medium? I think not just Pakistani awam. I think बाहर भी जब ये चीजें हमने play की थी तो there was a very good reaction to it. Right, not just in Pakistan. Pakistan का तो already है क्योंकि they know what you're listening to. अच्छा classical है वो, but बाहर जब आप जाते हैं they don't know what this is. This is something new for them, something fresh for them. Yeah, so I think हमारी main motivation, there was a time in 2019, I guess, where we both were, at least I was like almost done. कि यार क्या पार्टियों पे जाके बजाई जा रही है, प्रोडक्शंस निकाली जा रही है, ठीक है, लेबल्स अच्छे मिल रहे हैं, पैसा ₹1 नहीं आ रहा. Where do we go from here, right? यहाँ पे सीन यही रहना है, कभी पुलिसियों ने आगे पकड़ लेना है, पार्टियां बंद करा देनी है, कभी हमारा इक्विपमेंट पकड़ा जाना है. So I started with like क्या थोड़ा चांस लेते हैं, देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है. So मैंने कुछ एशिया में ईमेल्स करना शुरू की अपनी प्रेस किट्स एंड ऑल. So I got a response from this guy who was arranging a festival in Thailand, and he was very positive. Like उसको हमारी साउंड बहुत अच्छी लगी, and he wasn't offering much, but he was offering us at least enough to make up our mind. कि यार let's go and give it a shot. क्या सैरी करके आते हैं. So we went to the festival and the lineup was massive. Like it had DJs इनको हम सुन के idolize करते थे कि यार. And we're staying in the same villas, and we properly explored the DJ life क्या है, and it was amazing, right? और first day था, हम लोगों की पहली gig थी. It was on CDJs. पाकिस्तान में वो भी नहीं होते, तो हमें कुछ पता नहीं है कि हमने बजाना कैसे है. And it's a massive festival in Thailand, like a lot of people. Sunset का हमारा set था. But we said we'll figure it out. Yeah. और हम गए, हमने जब play किया तो we played a lot of Eastern instruments वाली vibe वहाँ पे. And it was something really new for them. Like they were coming from a really techno background. Right. And the kind of response we got, it was enough for us to, start it all over again. It was really good. Like in the end, the organizer came to us and he asked us to close the night, which was like not even expected. Wow. It was like people are asking for your set. Some of them missed it. So I think उसने हमें ना reignite कर दिया. And then for consecutive, I think 3 years, we went to Thailand, we went to Asia, Kafafel, Cambodia. So हमने वहाँ पे काफी जाके बजाया और वहीं से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. जब पाकिस्तान की हमारी एक छोटी सी मेंटालिटी है कि आप बाहर से आ जाएंगे ना तो आप
वैलिडेट हो जाएंगे। तो वो एक्सेप्टेंस एक और लेवल की आने लगी कि यार अच्छा वहां पे इनका सीन है, बजा के आए हैं तो ये तो अच्छे ही होंगे। अब हम खबरें भी बजाएंगे तो वो लोगों को अच्छी लगेंगी बिकॉज वी क्रिएटेड दैट जोन, राइट? दैट्स व्हाट टीचिंग इज, कि you create a zone where everything you play becomes right. That's all it is, right? So I think then we had a brand too, like Fake Shamans, a logo, and we were marketing it properly, at least for our groups. Like we were not smart enough to beat the algorithms and do anything. हम मतलब गाने भी बनाते थे, हम बजाते भी थे, हम अपनी मार्केटिंग भी खुद कर रहे थे, हमारी डे जॉब्स भी होती थी। तो जितनी हमारी उम्र और समझ थी हम करते रहे साथ साथ चीजों को। और फिर इन द एंड वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्यू थिंग्स के अच्छा जी कुछ लोकल म्यूजिशियंस के साथ काम करके देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। बट हमें म्यूजिक का लोकली कुछ पता ही नहीं है, हमने तो कभी म्यूजिक सीखा नहीं, हम तो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, वी डोंट इवन नो जैक अबाउट म्यूजिक थ्योरी। तो वी वर लाइक यार थोड़ा सा इसको सीखते हैं। फिर हमने एक उस्ताद लगवाए, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, पियानो सिखाया, थोड़ी सी म्यूजिक थ्योरी बताई। एंड दिस वाज लाइक 3-4 years after Fake Shamans, after releasing few productions, and where we started learning music properly. कि यार अगर हमने इनके साथ काम करना है तो हमें एटलीस्ट लिंगो तो पता होना ये क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, स्केल्स वगैरह ये वो। एंड इन दैट प्रोसेस हमारी प्रोडक्शंस खुद भी बहुत इम्प्रूव हो गई टू अ सर्टेन लेवल जिस तरह से होनी चाहिए थी। Okay. So I think it all starts from learning and how eager you are to improve, and then few things came and together. Even like with these classical musicians, इनसे भी हमें बहुत वैसे सीखने को मिला, like फरहान, एजाज, राकिब वगैरह, मतलब they are like अपनी फील्ड के वो काफी मास्टर्स हैं। तो मैंने अगर एजाज भाई हैं, he is like a very excellent vocalist, classically trained और ये सब, even राकिब classically trained। तो वो एक it was like for us it was like a mountain to climb। मतलब बहुत मुश्किल था हमारे लिए शुरू में, और हमें समझ ही नहीं आ रही ये राग कौन सा चल रहा है, ये कितने ताल में चल रहे हैं और ये वो। So it was very hard, लेकिन eventually we had to get something out of us and then really push ourselves. Actually, so this is really, I think it was rewarding at the end. This is really interesting then. What is it that an EDM house music duo that has been producing and performing for a while, give me some examples of ye jaise tum abhi bata rahe the, when there's like this almost like clash with the classical desi classical trained school of thought. What were some of the things that, for example, you had to learn, and what I'm sure there are also some of the things that unko bhi seekhni padi hongi na, because they can't just be one of the tumhe classical track bana doge, it won't be that mashup thing. The main thing was the genre, like what we work in is very static or very repetitive, right? एक ही kick चल रही है 4x4 आपका वो चल रहा है, and classical में it's totally different। कि हर दफा उन्होंने एक नई एक ही टाइम स्केल में, लेकिन उन्होंने हर दफा डिफरेंटली एक ही चीज को करना है। अगर अलाप भी है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो अगली दफा एक और नए रंग के अंदर आएगा। और उसमें बीट्स का भी बहुत फर्क था। क्लासिकल में वो 3 बीट होता है, ट्रिपलेट्स होती हैं और ये सारी चीजें। तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था टू कम टू अ प्लेस जहाँ हम दोनों कुछ ना कुछ ऐड कर सकें। कि उनको भी क्लासिकल से हट के थोड़ा हमारी साइड पे आना पड़ा और हमें भी थोड़ा अपनी साइड से हट के थोड़ा उनके पास आना पड़ा। तो वो काफी मुश्किल था हमारे लिए, स्केल सीखने बड़े मुश्किल थे हमारे लिए। और वोकल्स पे काम करना, हमने वोकल्स वगैरह पे काम किए हैं, लेकिन आर वोकल्स आर यूजुअली सैंपल बेस्ड, और वो सैम्पलिंग करके आप फिट कर लेते हो किसी तरह। वर्किंग विद अ वोकल विद अ क्लासिकल इन्फ्लुएंस वो काफी मुश्किल था टू ऐड म्यूजिक अराउंड इट। तो हमारे लिए, मेरे लिए तो काफी मुश्किल। But I think we were lucky in a way that we were working with people who were really master of what they do. So it kind of became a little effortless for us कि everything came together. Like as producers हमने उनके elements लेके main picture paint करनी है। So जितने वो elements अच्छे होंगे, it'll become easy for us to paint the whole picture and structure the whole thing and vibe. So I think we were lucky in that way that all of them were like really brilliant with whatever they do. So yeah, that was the thing is ये classical वाले भी ना अब आहिस्ता इस साइड पे आ रहे हैं, electronic वाली साइड पे, even they're already learning. So that gave us a bit of help. When a long time ago when Nusrat did his like crossover albums, because he was not only famous just for being a qawwal, he was famous for like his Western collaborations with modern musicians and music. तो वो concept
एक शुरू तो हुआ था उधर. बट मैं ये पूछ रहा था कि जब ये लोग आए थे, did they have any prior experience of recording, producing, etc. in a non-classical environment, या तुम लोग उनका पहला experience थे? Right. So I think all of them are part of Mughal funk, which is a semi Okay. like electronic Okay. classical. So they do have an idea of electronic Right. patterns and undertones कि किस तरह से काम होता है. So I think Raket especially he has an electronic sitar too. अच्छा. And he loves listening to electronic music as well. So थोड़ा सा हमें easy इस वजह से उनके लिए भी था, और हमारा थोड़ा क्लासिकल का बहुत सुना है सारी जिंदगी, खान साहब को सुना है और इस तरह के म्यूजिक के ऊपर हम बड़े हुए हैं. So इसीलिए we were really fascinated as well that this is something new, and we are getting that chance to create something like this. Right. And what sort of time commitment are we thinking, जिसमें both parties were learning before something could be really made? Oh man, that's a good usually one. हम अगर अपना गाना बनाना चाहें ना, तो that maximum would take us 2 weeks basically. हमने एक हफ्ते में 2 गाने भी बनाए हैं. Which is 2-3 days. उसमें भी हम सारा 2 हफ्ते नहीं काम कर रहे होते, वो 1-2 दिन, because he's working, I'm working, so we have to manage a couple of hours a week. लेकिन इन लोगों के साथ, because it's a huge band as well, मतलब different artists हैं, फिर इनके अपने अपने bands के वो चल रहे होते हैं, concerts and commitments and projects, recordings चल रही हैं, ये चल रही हैं, तो for us that was very hectic क्योंकि so we're not used to that. हमने पहला जब हमने सियाचिन रिलीज किया था, एक वो हमारा ओरिजिनली प्रोड्यूस गाना था, तो हमें उनके एंड से वो थे भी उस टाइम जरा अवेलेबल, तो हम लोगों ने जैम वगैरह करके लाइव परफॉर्म भी करना था, तो performed it initially, and the response we got, we thought maybe we should record a studio version as well, right? But since वो live jam हमने बनाया हुआ था, it was easy for us to create that. Right. But the next one, which we'll be releasing next month, Bala Jori, that was the first track that got us all together. Took us 3 years to release that, and still not released. It took us 3 years. A lot of commitments, and then pandemic. We started before COVID, और बीच में कोविड आ गया, सो बहुत लंबा ब्रेक आ गया. वो टाइम भी ऐसा था कि कोई भी आर्टिस्ट इतना मोटिवेट था नहीं काम करने के लिए. आपने करके रिलीज भी करना तो जाहिर होगा गाना. सो हमने गाना खत्म कर लिया था तकरीबन आई थिंक 1-1.5 साल पहले, बट वी वर जस्ट वेटिंग फॉर बेटर टाइम टू रिलीज दिस. और शायद उस टाइम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इतना मैच्योर भी हो गया इन व्हाटएवर फॉर्म दैट maybe it will have a different impact. Okay. No, because the reason I was asking was, you guys really had to believe in this idea ke lage raho na, you don't have to find a classical musician, you don't have to go around learning ye scales or taal or ye wo sab kuch, you had like a thing going, right? I just wanted to focus in on that. There's another song, there's the Noam Chomsky song, theek hai. That is a completely different direction again, more of like it's like a concept album. This is a concept song, I guess. It's not like a regular Gana, right? Yeah, it's more like a political statement kind of art piece. Like an art piece, exactly. Yeah. Why do that? Also, pehli baat. or dusra, then how did it come together? Right. So it was probably the second project we did for Ian. So Ian is a journalist who used to work with New York Times. So he approached us for this project so basically he was doing a documentary research on sea slavery and a lot of other sea crimes. The project was The Outlaw Ocean. Okay. And he had like 10 years of work under his belt. Right. Like उसने 10 साल सारे समुद्रों पे गुजार के footage or audio samples इकट्ठे किए थे. So he sent us the library, and he was collecting tracks from different producers all around the world in terms of supporting his cause. So that was the first project. Like he sent us those samples, and we heard that, and instantly, I mean, at least I imagined a lot of stuff which was going on, because it was so surreal in a way. कि गोलियां चल रही हैं, लोग चल. It was amazing, like in a very dark way. So yeah, we instantly created a track with that, and he really liked it. And then there was another project he was doing on Chomsky, and he had like library of Chomsky's recording and all. He was like, "You guys want to do this as well?"
So when we heard that library, so instantly his philosophy for Palestine and where about a lot of things related और to उन humanity दिनों came out. में अभी पैलेस्टाइन वाला सीन भी चल रहा था. काफी heat पे था गाजा वाला सारा scene. This was a like few years ago, and then I think this was the right opportunity for us as well, because it was a good cause. Even this, Right. and even the outlaw project wala jo protecting the seas and the animals and the crimes on the sea, I think that is also a good cause, and artists should actually work for causes as well, not just themselves. Yeah. नहीं, I mean it's वही वाली बात है ना कि you're not just doing, it's काफी obvious कि you guys aren't just making music कि हाँ जी हमारे गाने चलें फिर हम कोई फेस्टिवल बजाएं पैसे बचाएं. I mean it's great if that happens, or hopefully it will, but also there's like side pursuits of expanding your musical library with the classical music, and then creating these art pieces, as we have to call them because that's what they are, cause based. पिछले अब 3 साल होंगे, कोविड से पहले भी सॉर्ट ऑफ शुरू हुआ, 2017 से जब ज़रा म्यूज़िक का सीन फिर शुरू हुआ था पाकिस्तान में, and then Spotify भी आ गया, and now there's a new Coke studio, and if you ask people it'll be like बस जी Gen Z जो है ना उसने सारे मसले हल कर दिए, एंड म्यूज़िक का सीन बहुत अमेजिंग हो गया पाकिस्तान में, और और वो सारे dark days गुजर गए and everything is amazing. That might be true for some, not true for others. What has your experience been पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान में? Right. So I think I 100% agree with you कि पिछले 3 साल में at least Pakistani music is on the map. Like people across the world are talking about it, right? And there has been some fabulous work recently, but I think जब आप इतने लेवल पे इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में चीजें क्रिएट और अचीव करते हो, यू सेट अ सर्टेन बार फॉर योर ओन सेल्फ, राइट? हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू कोप अप विद दैट? देन यू हैव टू come up with something more amazing than something you created before, right? That's the bar you're setting up for yourself. The right? Second album is always more difficult. आपका फिर अपने आप से कंपटीशन लग जाता है. When we started creating music, we never even हमारे अभी भी कभी ज़हन में नहीं आता कि कोक स्टूडियो में लाइक हम कभी होंगे, या कभी हमने कभी वो सोचा भी नहीं. लाइक इफ इट हैपेंस लाइक that was never our goal with the music, but music itself is an amazing thing. Like it just finds its way. वो कहाँ आपको ले जाता है. I think जहाँ हमारा म्यूजिक हमें लेके गया है, हमारा तो खुदा के बाद म्यूजिक पे बड़ा शदीद किस्म का यकीन पक्का हुआ है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या कर देती है. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. We created this track काफी साल पहले. And I named it Encore. It was for some Mexican label. It was a really nice track. So 3 years forward, we are standing in front of Angkor Wat on our tour in Cambodia. And I never ever thought कि मैंने जिस जगह का नाम रखा है इस गाने पे, मैं उस जगह के सामने होऊंगा because of my music. So हमारे लिए इस तरह के experiences ज़्यादा important हैं और हमेशा से हैं और रहेंगे कि there's another side other than brands and money and everything, because that follows. कभी भी कोई artist, legit artist, मेरा नहीं ख्याल पैसे के लिए काम करता. आर्टिस्ट बेचारा तो होता ही ख्वार है, मतलब उसने या पैसे अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. I think your art should be solid enough that it should pay you at some point. चाहे 20 साल की स्ट्रगल लगे, लेकिन आपको एक दफा वो पैसा दिखा के जाएगा. Like that's how it is. It always has been, right? So हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि यार बस म्यूजिक बनाओ, जिसने सुनना है सुन ले, जिसने नहीं सुनना छोड़ दे, गालियां देनी है दे दो, कोई मसला नहीं. देखते हैं क्या होता है. नए तजर्बे करो, अपने आप को चैलेंज करो, और just create something जो कि that's all there is going to be when we leave this world. So that's it. Did the बोलो नहीं, for me, like the Gen Z question is कि मतलब for me it is very encouraging sign कि ये लोग भी अब इस side पे आ रहे हैं. The young people are actually listening to more electronic kind of stuff, even if it's hip hop, even if it's indie or whatever. There is some electronic elements into them, और उसकी वजह से फिर हमें भी exposure काफी मिलना शुरू हो जाता है. So I think that is an encouraging sign. It shows like the industry is moving forward. There are still a lot of challenges, especially concerts or gigs or performance-wise. Abhi, not just for us, even these
ये जो हिप हॉप आर्टिस्ट आ रहे हैं आजकल, इनके लिए भी काफी प्रॉब्लम्स है परफॉर्मेंस वाइज. आई थिंक दैट इज समथिंग we need to tackle. बाकी उसके अलावा I think it's very encouraging. People are actually coming back to music and starting to make music again. Yeah, I listen to Pakistani music all the time. Like there was like 3 महीने मैंने सिर्फ सुना ही ये recently जो produce हो रहा है like तलाल के और गाने. even internationally मतलब अब South Asian artists पे काफी एक नजर भी आ गई है. Even through these people and people मतलब social South Asian artists abroad as well in America, USA, Canada वगैरह, उनकी वजह से भी अपना आप पे नजर आनी शुरू हो गई है कि हाँ these, because we were very much ignored from the start कि ये पता नहीं कौन है. हमें बाहर से वो लोग recognize कर रहे हैं कि हाँ भाई इनका भी म्यूजिक है. हमें आज से 4 या 5 साल पहले जब इतना नहीं था स्टिग्मा मतलब, तो हमें बाहर के काफी सारे अच्छे मैगजीन्स अप्रोच करते थे ना वे कि ये पाकिस्तानी बॉयज हैं और ये यहाँ पे हाउस म्यूजिक कर रहे हैं, रेव्स कर रहे हैं, एंड इट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर देम. सो हम काफी लाइक इंटरव्यूज और आर्टिकल्स हम लोगों के उस टाइम के होते थे यूजुअली, बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू फॉर देम. दे कांट इमेजिन कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इस लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है. एंड देन वी रिकॉर्डेड सम कंटेंट एज वेल जहां पे हमने लाहौर को काफी शोकेस किया अपने म्यूजिक के साथ. तो वो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी बन जाती है कुछ चीजों पे. सो आई थिंक उस वजह से थोड़ी अटेंशन रहती है चीजों के ऊपर. इट मैटर्स अ लॉट. नहीं, इट डज मेक सेंस क्योंकि स्पेशली ये कोविड के टाइम पे जो सोशल मीडिया तो वैसे ही फट रहा था, बट वो इतना एक्सप्लोसिव उसकी ग्रोथ हुई बिकॉज एवरीवन वाज एट होम. तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स अ वियर्ड एग्जांपल, लेकिन वो है ना बॉय अरसलान ऐश टेकन प्लेयर जो है, एक है, ही वेंट एंड वन लाइक रैंडमली ना कोई बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत गया, वो चैंपियन बन गया. सोया भी नहीं 2 दिनों से. हाँ, तो उसकी वजह से पीपल आर लाइक अच्छा पाकिस्तान, हमने तो सोचा ही नहीं था पाकिस्तान भी एक मुल्क है और मैप पे है, बट लाइक टेकन थोड़ी खेलते होंगे उधर. तो पीपल स्टार्ट टू कम टू पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान में हम टेकन खेलेंगे इनके प्लेयर्स के साथ, कोई बहुत गुड सीन है. सेम थिंग हैपेंड विद यूट्यूब वेयर अच्छा इंडिया में बड़ी फैसिनेशन है पाकिस्तान के बारे में ना. दे डोंट गेट टू सी पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम देयर न्यूज़ में वी कुड बी लिविंग इन झुग्गियों में और वो बम फट रहे हैं, हु नोज. But then they see Irfan Junejo की videos, they see like Momina Munir के a day in school in Pakistan, और वो फट के फिर एकदम से ना, then they're like अच्छा और दिखाओ. फिर like Coke Studio and the past couple years of Spotify being in Pakistan, वो वाली बात है ना, rising tide lifts all boats. तो it would make sense कि house music वाले fans भी होंगे, they'll be like अच्छा यार हाँ पाकिस्तान का बड़ा नाम है, I'm not into hip hop, I'm not into ये classic fusion वगैरह, house music का scene है, तो then you guys come up, right? Has that been the case कि लोग ढूंढते पिछले 1-2 सालों में आए हैं to you guys? Yeah. इंडिया से स्पेशली हमारे काफी फॉलोइंग वगैरह भी है. इंडिया से 1-2 गाने भी रिलीज हुए हैं इंडियन लेवल्स वगैरह पे. We had few people visiting us in Pakistan, like from Berlin. काफी सारे हमारे दोस्त आए हैं, like they wanted to visit Pakistan, right? जो हमें 2-3 साल हर साल हाँ थाईलैंड वगैरह में मिलते रहे हैं. एंड इवन इन पाकिस्तान भी काफी सारे लाइक लोग डिफरेंट हाउस म्यूजिक से रिलेटेड अप्रोच करते हैं यूजुअली, बट दे ऑल आस्क यूजुअली द सेम थिंग. हम लोगों का इशू ये है ना कि हम अगर एक चीज मिल जाती है तो हम फिर उसी की चीज पीछे पड़ जाते हैं. Like we stop exploring other things. Even with brands, like they just want the same thing now. कि यार ये बना दो, ये कर दो, ये कर दो. They're not exploring other dimensions, right? They're just playing safe. Whatever generates the money, whatever works, that's right. Yeah. Good thing happens when you start exploring different things, right? You start challenging. That's how perhaps Coke Studio came, right? They started to experiment different things, right? But that needs to be consistent, right? आप वही आर्टिस्ट कितने चला लेंगे 1-2 साल, 3 साल, मतलब एंड में वो बेचारे भी थक जाएंगे यार. हाँ, what do you think the limiting fact, क्योंकि ये वाली बात जो तुम कह रहे हो ना, this is a common theme across art forms, मतलब टीवी, ड्रामा, वेब सीरीज, मूवीज एंड देन म्यूजिक वगैरह सब कुछ. they're like इस तरह की स्क्रिप्ट चल रही है, इसी तरह की स्क्रिप्ट को बैकिंग मिलेगी, डोंट ट्राई एनी न्यू शिट. फिर ये होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई, हमारी फिल्में नहीं चल रही, आप कोर्ट से बैन लगवा दो, इस तरह की बातें. बट what do you think the limiting factor is for this risk avoidance? क्या पैसे नहीं है हमारी इंडस्ट्री में कि वो
एक्सपेरिमेंट करें? व्हाट्स द, या बस सोच का मसला है? I think it has more to do with सोच. पैसे बहुत है हमारे पास. मुझे भी सोच का ही मसला है. पैसे बहुत Sure. पैसे बहुत है. There's not enough acceptance for art in general, हमारे में especially पाकिस्तानियों में. But उन्हें ज्यादा होता है कि पैसे से मजीद पैसे बनाना. आर्ट कंज्यूम करने का शौक है, लेकिन आर्ट के लिए पैसे निकालने का शौक है. Spotify ने भी यही कहा है. They want to make, उन्होंने ना उस पैसे से पैसा बनाना है, आर्टिस्ट नहीं बनाना. That's the problem. No one is willing to invest on artists. Like कौन है यहाँ पे, कितने ब्रांड्स हैं जो आपकी म्यूजिक के स्कूल्स खोल रहे हैं या वर्कशॉप्स खोल रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट आर्ट. लाइक जो अगर हमारे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं उन पे नॉन लोग ही 90% आते हैं. हाँ, मतलब कुछ लोगों को बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, राइटली डिजर्व, राइट, बट वो कितने परसेंट होता है और कितने परसेंट सेफ प्ले होता है. सो दैट प्रीटी मच आंसर्स. दूसरा, इधर वो सिस्टम्स वगैरह भी नहीं है आर्ट को सपोर्ट करने के लिए. आर्टिस्ट को सब कुछ खुद करना पड़ता है. उसने बनाना भी खुद है, मार्केट भी खुद करना है, उसके ऑडियंस भी खुद पकड़नी है, बंदों को बुलाना भी उसने खुद है, सब उसने खुद ही करना है अगर he wants to do something with his art. वरना मतलब कोई सपोर्ट बेसिस नहीं है कि अच्छा मैंने आर्ट बना लिया, अब ये कोई मार्केट कर दे मेरे लिए या कुछ और कर दे. There is no support based system. ये भी एक इशू है. Or you get lucky that something goes viral, or it gets attention of something big, and आपकी एक चीज डिस्कवर होती है तो आपकी बाकी सारी डिस्कवर हो जाती है. तो ये भी एक फार्मूला है. बट वायरल का भी ये है ना कि if there's no, so we had this whole episode with this guy Ahmed Naqvi about Pakistan की music industry and how it like effectively died 71 के बाद, and he really broke down the things which would come together to be an industry. मतलब label scene होगा, there'll be distribution, and then there'll also be scouting for new talent ताकि ये chain चलती रहे and people have venues to perform at regularly. और ये सारी चीज़ें infrastructure जब setup होगा, चलेगा कुछ अरसे, then you'll have like a pipeline of new people coming, established people growing, and an audience for everybody. And the idea was कि पाकिस्तान में there's like big chunks of this thing missing. तो वो वायरल वाली बात भी यही इत्तेफाकन मैं अभी सीख रहा था. there is some new thing happening by the name of Crystal Records Live or something. वो नया शो आ रहा है. And उस पे I saw a name जो कि मैंने बड़े से बाद देखा, and that name was आबिद ब्रोही. आबिद ब्रोही exploded somewhat super के साथ पटारी के ज़माने में. उस बात को I think 6 साल हो गए या क्या हो गया. बीच में he did like a couple of shows, he went super viral, and then he vanished. तो he's somebody who I'm assuming was from a not super solid financial background, who couldn't afford to just keep making his own music. Because जो तुम लोग कर रहे हो, it's like a lot of effort, but also you guys have good educations which got you decent jobs which allow you to fund this thing, right? अगर आपके पास इसके पैसे नहीं हैं तो a lot of things just doors never open. तो वायरल वाली बात जो तुम कह रहे थे कि just being viral might get you like one shot in Pakistan, but you might never get that second shot की बात if somehow all the magic doesn't happen. बाहर की इंडस्ट्री में क्या फर्क सीन है? like you went to these festivals in East Asia, Southeast Asia, माहौल, infrastructure, acceptance, क्या differences थे from your Pakistani experience? Right. Want to take that? Okay. So बाहर बहुत मेजर डिफरेंस है. आपने जो बात की उसमें दो चीजें हैं. सो पहले वायरल वाली बात की मैं एड्रेस करता हूँ. आई थिंक वायरल होना आजकल अगर आपके सामने लैपटॉप या फोन है तो एक इजी सीन है. You just have to make something shitty. That's it. Right? मतलब अगर मैं आज किसी सियासतदान की तकरीर पकड़ के सैंपल कर दूंगा ना तो मैं कल वायरल हो जाऊंगा. Right. But question is, do I want to do that? Like, do I want to do that sort of work that I look back and be ashamed of? Right? मैंने क्या किया था? Right? हमने जब नुसरत वाला ट्रैक भी बनाया था तो हमने 10 साल नुसरत को हाथ नहीं लगाया. Like, हमें इतनी हिम्मत नहीं हुई that because we wanted to be there to create this, right? Because we wanted to be proud of it when we look back at it. So एक तो ये चीज है. Secondly, financially वाली जो बात है, I tried working full time as a musician for 2 years, right? And the shit I went through, I don't want to go through it again. Okay? There came a point when I didn't even want to create music. Like, I started hating my music because I was depending financially on it, right? It doesn't work like that, right?
And then, I went to the other option कि यार I have to create a certain balance. Like मुझे अपने bills देने हैं, मुझे अपना घर चलाना है, and then, जो मेरे पास time होगा मुझे उससे अपना art बनाना है. And if that pays off, great. If it doesn't, it's okay. So थोड़ा सा ये एक है, अगर आप बाहर हैं तो आपको ये mindset नहीं रखना. आपको बचपन से यही बताया गया है कि आप आर्टिस्ट हैं और आप आर्टिस्ट ही बने. अगर आप नहीं बनेंगे तो आप पागल हैं. Like we met this guy Alan. We met this guy Alan. Like he was such a brilliant musician. मतलब वो 5 तरह के बर्कली का ग्रेजुएट, 5 तरह के इक्विपमेंट्स. उसको बचपन से कहता मेरे दादे ने मुझे यही बताया कि तूने ये बजाना है और मुझे मजा आता है ना, I'm good at it, right? And he's doing whatever he's supposed to, right? तो एक सेट माइंडसेट का बहुत फर्क है सर कि हमें बताया शुरू से ये गया कि यार पहले ये करना है. आर्टिस्ट तो जिक्र ही नहीं ना होता कभी. आप कभी कह के देखें घर में मैं आर्टिस्ट बन जाता. yeah. कोशिश करें. मतलब अगर जब मैं फुल टाइम आर्टिस्ट था तो मुझसे कोई पूछता था कि आप क्या करें, मैं कहता यार मैं गाने बनाता हूँ. वो कहते ठीक है लेकिन करते क्या हो, जॉब क्या करते हो? गाने तो ठीक है तुम कर रहे हो, काम क्या करते हो बेटा? मतलब यार मैं काम नहीं कर रहा, क्या बात कर. तो ये आपको बाहर आप कहेंगे यार मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो आपको एक सर्टेन आपसे बैठ के बात की जाएगी एक सर्टेन वे में, जिस तरह किसी उस्ताद या टीचर का सुन के करते हैं. आप यहाँ किसी को बताएं मैं टीचर हूँ तो सेम रिएक्शन होगा. आप बाहर किसी को बताएं मैं टीचर हूँ तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा, राइट? सो ये तो फर्क है. What about venues like बाहर, festivals तो चलो they're very big, they're very flashy, 1000 बंदे आए हुए हैं ये वो. Do you feel कि बाहर there are like you can't have a festival every day, you can't play at a festival every day. छोटे venues सबके पास होते हैं बाहर in like the countries that you've been to, and they can regularly make छोटी but consistent income type scene हो सकता है. बाहर जिन कंट्रीज में हम गए हैं वहाँ पे तो काफी अच्छा सीन था. इवन लाइक मलेशिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव आउट ऑफ द अदर वंस दैट वी वर इन. वहाँ पे भी देयर वर लाइक बार्स वेयर यू कैन प्ले, and even those bars they can fill up to 100-200 people और काफी decent अच्छा crowd और musically educated, and it's proper work कि आपको वो आपका नाम होगा flyer पे, आपका set time proper होगा, आपको end of your performance you'll get paid, and you get perks like DJ perks जो भी होते हैं. You get a place to stay, get a place to stay. मतलब proper वो, क्योंकि वहाँ के laws इस तरह के हैं जो आप exploit नहीं कर सकते to an artist. If they exploit me and then I go to the system, जी मुझे they stole from me or whatever. वो उधर पे they're liable to pay me for my art. इधर वो कोई laws ही नहीं है. आप मुंह फाड़ के पैसे मांग सकते हैं कि यार मैंने गिग खत्म किया, मेरे पैसे कहाँ? हाँ, this is what यहाँ पे कहते हैं पहले साउंड वाले को क्लियर करने दे फिर आपको करते हैं. This is what we agreed on and you need to fulfill that. Yeah. So even like in a place like Malaysia which is more conservative, वहाँ पे भी था. और उसके अलावा ये कंबोडिया और थाईलैंड वगैरह में तो it was even better क्योंकि वहाँ इस तरह के scenes होते रहते हैं. People are, there's more tourism around it, so people are more accept. अच्छा, पाकिस्तान में ना अब म्यूजिक का सीन बढ़ रहा है, उसके साथ शायद लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही होंगी. Perhaps even you guys are getting more live opportunities. Like I know a few people who are, I don't know if house music is part of it, but they do have these festivals. जैसे वो Hunza Fest हुई थी, और there's Danny with Cape Mons Records in Karachi, और ये वो, like they're doing stuff. ठीक है. Is there ये वाली बात जो तुमने की कि there's this attitude of like professionalism, you treat this like a job, like this guy is fucking hired and you have hired him and he has obligations to you, you have to them, और सबको on the level treat करना है. पाकिस्तान में ऐसा historically नहीं था. Is that changing या उसमें अभी इतना change नहीं दिखा? सर मसला पता है क्या है, हम कोई भी चीज जब खुल के एक्सेप्ट करते हैं ना तो हमें डर लगने लग जाता है कि यार ये हमने क्यों कर लिया. अब जब हुंजा फेस्ट हुई तो आपने उसकी बैकलैश भी देखी क्या हुई. ठीक है. A lot of people got involved. हर बंदा अपना मंजन बेच रहा है कि यार मैं सही हूँ, वो मतलब मैं कर रहा हूँ. इशू ये आता है कि या तो हमें पूरी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए या हमें पूरी तरह रिजेक्ट करना चाहिए. There shouldn't be a gray area around it, right? Okay. आप ये नहीं कर सकते कि यार अच्छा मैं ज्यादा लिबरल हो गया हूँ, मुझे अब वापस थोड़ा कंजर्वेटिव होना. ठीक है. या तो आप अलाउ ही ना करें कि भाई आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसी जगहों पे मौसीकी बजाने पर फाश. ठीक है, बैठो घर, बंद कर दोगे.
या फिर आप एनओसी दे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं यार बेहयाई ज्यादा हो गई है थोड़ी, आप लोगों ने यहाँ पे गाने बजा दिए और सारी चीजें खराब हो गई हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। या आप दो ना अगर दे रहे हो तो फिर करने दो, बिकॉज ये चीजें बाहर बंदे को बहुत नजर आती हैं। लाइक हम इंटरनली नहीं देख रहे। अगर एक फेस्टिवल हो रहा है, उसको जो बेचारे करवा रहे हैं उनकी बड़ी एफर्ट है उस चीज को पुट अप करने में, ये आसान काम नहीं है। वो भी एक लाइक आर्ट फॉर्म है। इमेजिन द शिट दे हैव वेंट थ्रू टू गेट देयर, राइट? उनको ऑब्वियसली कुछ 500 लोग बाहर तो जानते होंगे, उन्हें बता रहे होंगे कि यार हम पाकिस्तान में ये चीज कर रहे हैं, एक अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश, एक लिबरल, जो हमें कहा जाता है कि हम एक लिबरल सोसाइटी है और हम पाकिस्तान में खाली धमाके नहीं हो रहे, पाकिस्तान में बड़ा कुछ अच्छा भी हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप वो सॉफ्ट इमेज देते हैं तो फिर देने दें। समझ रहे हैं? जब वो खराब होता है तो फिर बाहर तक काफी सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे बाहर से आर्टिस्ट आए हैं और बहुत एक्साइटेड होके आए हैं, बिकॉज पाकिस्तान में बजाना इज अ वेरी एक्सोटिक एक्सपीरियंस फॉर देम, राइट? कि यार हम इट्स एज एक्सोटिक एज कि हम कहीं ईरान में जाके बजा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने इतना सुना और हम वहाँ म्यूजिक बजा रहे हैं। Like we have so many friends who just want to come here and play music just for sake of it, for the experience कि यार हमने पाकिस्तान में बजाना म्यूजिक, right? But when they come and things get shut down and people get treated in a certain way जहाँ पे उनके साथ ज्यादती हो रही है, सारे इवेंट के पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ और लॉस में और आर्टिस्ट पे, वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। इट हैज अ बिगर पिक्चर टू इट, राइट? या तो करवाएं ना, या करवा रहे हैं तो फिर अच्छी तरह उसको करने दें। यू शुड गेट गुड प्रेस आउट ऑफ इट एटलीस्ट। Yeah, it does seem like थोड़े वो ना मतलब like change is painful type situation है कि कुछ लोगों ने सोच लिया है कि this is a good opportunity to help with the image and also push some avenues, बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं कि हाँ जी थियोरेटिकली हमें आपकी बात से एग्रीमेंट है, बट जब हमें देखने को मिली तो हमने अपना माइंड बदल दिया बिकॉज हमने या तो पूरी तरीके से ना हमें समझ नहीं आई, बट नाउ दैट्स योर फॉल्ट। और देखी भी है, देखी भी है, ये नहीं कि देखी नहीं, देखी पूरी है। हाँ हाँ ठीक है ना, ये तो फिर जाती है। या और फिर ये भी है कि बाहर हमारा इमेज बुरा क्यों है, तो इट्स लाइक you want, it's like you want like all things at once but they can't all be true एक साथ, कि मतलब आपकी हर मर्जी भी चले और बाहर इमेज भी खराब ना हो। और खैर तो फिर what is then, हमने शुरू में थोड़ी बात की थी इस बारे में, what is the future trajectory? अब कोविड भी एक हद तक कम हो गया है पाकिस्तान में, चलो एक्सेप्टेंस है, one guy is moving to Canada, the outlook has always been global, काफी इवेंट्स भी किए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं। what's the like, is there like a 5-year plan? Yeah, right. Yeah, there is. So आजकल वही चल रहा है। आजकल वही प्लान ही चल रहा है। फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। So we have sorted out releases for like entire year अभी। So we'll be releasing, हमने ये पिछले 2-3 साल में जो इंटरनेशनल म्यूजिक था वो बिल्कुल रिलीज नहीं किया। So we're drifting away from our core focus. So we want to focus back to that, right? Because अब हम internationally काम करने देख रहे हैं। Playing together in Pakistan is not on the table for few years until or unless something really big happens. Then I can always come back and get done with the project, right? But हमारी थाईलैंड में बहुत अच्छी फैन बेस है, लाइक हमारे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, एंड वी हैव अ record label too, जिसपे हम रिलीजेस कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट की। सो हम अपनी रिलीजेस करेंगे, कुछ अगर प्रोजेक्ट्स होंगे उन पे वर्चुअली काम करेंगे। एवरी ईयर वी वांट टू गेट टुगेदर इन थाईलैंड एंड परहैप्स do an event for our own label and few other events, or like internationally हम एक साल में एक दफा मिलेंगे। और he has a solo alias as well, I have that too, so हम वो भी explore करेंगे अपने अपने chapters. So yeah, I mean we're not closing our options right now. I mean we just keeping it open and see what happens. What's the record label situation? I didn't know about this. It's called Fake Rituals. Okay. So 1-2 साल तो खामोशी रही है because हम काफी busy थे अपनी चीजों के अंदर, but now we want to focus it full time because there's good money in it too. हमने एक all Pakistani producers की उस पे एक एल्बम भी निकाली थी with house music producer across the Pakistan, और उससे हमें थोड़ा अच्छा रेवेन्यू आया था। So we thought कि अगर हम इसको full time करते हैं और अच्छी releases करते हैं, and it's going to give platform to a lot of local producers as well, to showcase them, थोड़ा work in progress हो के साल 2 में it can pay us off too, and then we can
tour around the globe as well, maybe साल में एक दो दफा, और शायद eventually इतना बड़ा हो जाए जो हमारा eventual goal है कि हम कुछ और ना करें और हम सिर्फ ये करें. So yeah. Acha, what's the aim with the record label? Like, what's the audience? What's the hopeful roster looking like? Pakistani producers, international, house only, other genres? क्या इरादे क्या हैं फिलहाल? Right. So we're keeping it for Pakistani Eastern classical vibe as well. We're releasing our new track Balajuri on it as well. Right. So एक तो वो थोड़ी सी हम vibe explore करेंगे, and then we're getting on board with a lot of Australia-based producers who are in Thailand right now. So हम उनकी कुछ EPs release करना चाह रहे हैं, और we'll try our level best के पाकिस्तान में भी अगर कुछ producers हैं और उनकी कुछ इस तरह की global sound है. With house, little bit of ethnic touch, then we promote that, because there's a lot of producers who are trying to work on that direction. Right. So yeah, that's pretty much the plan. We want to promote local artists as well, and then take our label to a global level as well. Yeah, that's a cool idea, especially क्योंकि जितना तुम लोग बता रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में connections हैं और experiences हैं, a lot of that is very tourism dependent. और अब tourism is slowly, now is the time when it's coming back, COVID की uncertainties के बाद. तो हाँ, it makes sense to be like ready for when it's like back at 100%. अच्छा, कोई और बात before our customary आखिरी सवाल? Is there something else that you guys want to talk about? I think we're pretty much sorted. Yeah. काफी गप्पे लगाई हमने. Okay. नहीं, but this is all very good. I'm glad we got to do this. And there's काफी इससे पिछले हफ्ते की जो एपिसोड होगी ना, उसमें भी काफी इस तरह की discussions थी with our guest about culture versus identity versus tradition, or being put in a box and trying to expand your own mind and putting that effort in. So there's a lot of good lessons for people. But चलें, अगर कुछ नहीं है तो फिर, as always, before we wrap, do you have any Jinn stories? He does. इसके सामने वाले कमरे में है भी. मेरे घर पे घूम रहे एक बंदा काफी सालों से. What? Right next door to me. Yeah, he's serious, man. Like I slept in that room once. उधर जो भी जाता है ना, उसको गंदे ख्वाब आते हैं. Like some horror stories kind of things. Oh, Even अच्छा. मेरी बिल्ली जाती है, वो बस she comes out shit scared, और वो बस मतलब you have to give like. So there's definitely something in that room. थोड़ा मतलब तुम्हें डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा इसके बारे में, कुछ ये तो तुमने मतलब ऊपर से बता दिया कि एक दफा हम गाना प्रोड्यूस कर रहे थे, गाने के अंदर जिन आके डांस करने लग गया. What? नहीं, बस वो काफी पैरानॉर्मल चीजें हो I'm just joking, man. जिन एक्चुअल किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंसेस काफी, उस रूम के अंदर भी काफी weird experience. काफी डार्क एनर्जी है उसकी कमरे की. अच्छा, this is like just a room in your house. Yeah, this is a room in my house. This used to be my bedroom as well. So when it stopped being your bedroom, did things get better or worse? अब मुझे लगता है कि it's happy because it has its own room now. तुम चले गए. तो वो क्योंकि कमरा खाली होता है usually. Nobody's going in there. तो yeah, he feels safer. Shit. हमने adopt कर लिया eventually. बस यार, I mean. Perhaps उसने. Yeah, perhaps. Keeping an open mind has its benefits. But chale, boys, thank you very much for making time and being patient with internet. Thanks as well, man. Do you have any one place that people should go Thank you. to find your stuff? Yeah. We are on Instagram, Twitter, Facebook, SoundCloud, Spotify, and all goes by the name of Fake Shamans. I'm really active on YouTube these days as well. So a lot of content we're releasing and publishing on YouTube. And yeah, we can look up at Fake Shamans on YouTube. When is the track coming out? 10th? 10th of June. 10th of June, so like this week. So this episode goes out on the 6th of June. So bus end of the week. Oh, sweet. Aapke gaane. Is there a video also? There was a video on your Instagram. Yeah, there is. Yeah, actually that's the video. Yeah. Video की वजह से भी थोड़ा delay हुआ है पूरा गाना. तो right. Okay. There is a video actually. Chale, boys, thank you very much for coming. And thank you so much, man. I think you have a lot of work
a lot of difficult tasks in your future, and I hope we'll run into each other again here in person, maybe in Canada. अच्छा मुझे Canada के बारे में बात करनी है, but चलें. Thanks for watching, everyone. We're gonna wrap here. You know where to find them. You know where to find us. And we'll see you next week. Bye.